Good morning, students. It's me, Miss SANIA, your English teacher, and today we are back with another lesson. As you all know that we have completed direct and indirect in the previous lecture, so today I am going to take a start with tenses. But before moving forward, hurry up, grab your notebook along with pencil and pen and start noting the important pointers. You're already familiar with the other guidelines, and if you're having any sort of questions, so definitely you can ask me in the comment section below. So let's move forward. Well, as you can see the picture which is over here, let's discuss the first picture. In the first picture, there's a boy who's playing with the blocks. Sam played blocks. Since we have already completed the other parts of speech, so you can clearly notice the difference. We have used play, that is the verb, and then ed. Ed means that we are talking about the past term, right? The action is done in the past because obviously he is playing. If, for example, if I have used an ing, so definitely that should be the present tense. लेकिन क्योंकि मैं ed बोल रही हूँ तो यहाँ पर past tense की बात हो रही है. किस तरीके से मैं बोल रही हूँ? ed, ing, ये हम further जब tenses को अभी further discuss करेंगे, then I'll let you know about it. I'll try to keep the lecture mix and mash up for you so that you can understand each and every point very clearly. Now moving forward to the next example, you can see the children are playing in this picture, right? Let's read the description. The children play. You can see we haven't added ed or we haven't added ing. We haven't even added the other helping verb. But when we see over here, we can see it very clearly that the children are playing. The action happens today or every day. It means या तो ये action जो है ये अभी हुआ है या फिर ये action जो है ये हर रोज होता आ रहा है. ठीक है? Every day same चीज हम करते हैं, right? Now coming towards the third example, she will play with her doll. वो अपनी doll के साथ खेलेगी. So you can see कि ये will लिखा हुआ है. will हम हमेशा यूज करते हैं फ्यूचर टेंस में, यानी वो चीज जो अभी ना हुई हो लेकिन वो चीज जो होने वाली हो. अब मैं ये सब किस तरीके से बोल रही हूँ, we will discuss further in tenses. The action will be done in the future tense. The action will be done in the future, यानी future में ये चीजें होंगी. So this is exactly all about tenses. Let's discuss further and then I'll come back and then I'll respond to your questions. Now, moving forward to the next slide. This is the content line. These all are the contents that we are going to discuss in this tenses. We will discuss about the introduction, how many tenses and which classifications they're divided based on time, how they're based on time, what is the frame of the tenses, what are the classifications which are based on aspect. Aspect means ke situation, circumstances. Block diagrams of tenses. In block diagrams, we are going to discuss about the structure of tenses. Then we are going to discuss about the list of rules and then what are how many in which classifications they're divided, what are the meanings, what is inside their meanings and what is inside their structure and everything related to it. And then at the end, we are going to discuss the list of examples related to all of these things. So moving forward, introduction. The word tense is derived from Latin word tempus. Word tense को Latin word से derive किया गया है जो word है tempus, which means time. Tempus का मतलब है time की बात करना, वक्त की बात करना, time frame की बात करना. A verb indicates the time of an action. Verb indicate करता है time of an action को, यानी कि जिस time कोई action लिया जाए, event, or conditioned by changing its form. या तो वो किसी एक्शन को इंडिकेट करे, यानी कि कोई भी चीज जो हो रही हो, किसी इवेंट को कि कहाँ के ऊपर जो है वो इवेंट को परफॉर्म किया गया है, या फिर कंडीशन को बाय चेंजिंग इट्स फॉर्म, या फिर उस कंडीशन को कि किस कंडीशन में जो है वो बेसिकली वो एक्शन लिया गया है, उसकी फॉर्म कब चेंज हुई, उसकी फॉर्म क्यों चेंज हुई. हमने फॉर एग्जांपल अगर पास्ट में एक इंसिडेंट हो चुका है लेकिन प्रेजेंट में आप उस इंसिडेंट के बारे में बताएंगे तो आप पास्ट को कोट करते हुए बताएंगे.
अगर आप उसकी प्रोडिक्शन बताएंगे तो वो चीज़ फ्यूचर प्रोडिक्शन होगी जो कि आप कोट करके बता रहे होंगे। तो ये तमाम चीज़ें आपके वर्ड टेंस में आती हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड व्हिच सेज दैट इट इज़ बेस्ड ऑन टाइम फ्रेम। हर चीज़ टेंसेस की आपके टाइम फ्रेम से कनेक्टेड होती है। किस तरीके से? लेट्स डिस्कस अबाउट दिस थिंग। Why do we discuss present tense before past tense? हम present tense को past tense से पहले क्यों discuss करते हैं? Let me just give you a review of this and then I'll come back towards this question. The word tenses may be categorized according to time frame. Tenses के word को time frame के accordingly categorize किया जाता है. When I'm talking about time frame, then it means I'm talking about 5 W's and H. 5 W's includes who, what, who मतलब कौन, what मतलब क्या, when मतलब कब, where मतलब कहाँ, why मतलब क्यों। तो ये 5 W's होते हैं और इसके साथ how आता है। how means कैसे। ये तमाम चीज़ें आपके टेंसेस में इंक्लूडेड होती हैं। आपके बेसिक जो टेंसेस होते हैं वो आपके 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। Now coming back to this question, which states that why do we discuss present tense before past tense? हम present tense से पहले past tense को क्यों discuss करते हैं? इसका सिंपल सा सिर्फ और सिर्फ एक आंसर है एंड दैट इज पास्ट में जो चीज़ गुजर चुकी होती है उसको भी जब आप किसी को बताएंगे तो वो प्रेजेंट कंडीशन होगी। जो ऑनगोइंग कंडीशन होती है हमेशा उस चीज़ को पहले डिस्कस किया जाता है जो पास्ट में गुजर चुकी होती है या जो फ्यूचर में आने वाली होती है। तो दोनों का रेफरेंस देते हुए आप प्रेजेंट कंडीशन या प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहे होते हो। ठीक है, दिस इज द मेन रीजन दैट वी डिस्कस प्रेजेंट टेंस बिफोर पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। देन सेकंड नंबर के ऊपर हम पास्ट टेंस डिस्कस करते हैं और उसके बाद थर्ड नंबर के ऊपर वी यूज टू डिस्कस द फ्यूचर टेंस। नाउ moving forward, once again I repeat, if you people are having any sort of questions in between, so definitely you can ask me in the comment section below. I will respond you over there. Now coming towards the next slide, the verb tenses. See, why have I written verb tenses over here? If I say that कि मैंने सिर्फ tenses की बात करनी है और अगर मैं verbs को निकाल दूं तो verb को निकालने के बाद क्या tenses itself complete हो जाते हैं? No, absolutely not. This thing cannot work out this way. The major reason is whenever we are speaking about tenses, so we are always referring it with verb. वर्ब के साथ हमेशा आपका टेंस लगता है तो आपका सेंटेंस कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि वर्ब आपका एक्शन वर्ड होता है। जब भी किसी सेंटेंस में एक्शन नहीं हो रहा है तो ऑटोमेटिकली आपका टेंस कैसे कंप्लीट होगा? So both of the terminologies are interlinked with each other, and whenever we are studying either tenses or either verbs, so we speak in connection with each other. Now coming back towards the present tense. Present tense expresses an unchanging, repeated or reoccurring action. Present tense आपका express करता है unchanging वो action जिसको आप दोबारा change ना कर सके, repeated जो कि repeatedly आप करते आ रहे हैं और reoccurring जो कि बार बार वो action आपका reoccur हो रहा है यानी बार बार आप उसको perform कर रहे हैं। और reoccurring action और situation या तो आप उस action को reoccur कर रहे हैं या फिर आप उस सिचुएशन को जो है वो रिपीट कर रहे हैं दैट एग्जिस्ट ओनली नाउ, यानी कि वो तमाम सिचुएशन जो कि अभी ऑनगोइंग हो, जो कि अभी चल रही हो, जिसके अंदर कोई चेंज ना हो। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट अ वाइड स्प्रेड ट्रुथ। ये आपकी एक वाइड स्प्रेड ट्रुथ भी जो है वो रिप्रेजेंट करती है, यानी वो सच्चाई जो कि आपकी चल रही हो। ये तमाम चीजें आती हैं आपकी प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, now coming back towards the next one, that is the past tense. Past tense expresses an action or situation. Past tense आपके action को express करती है या फिर situation को express करती है that was started and finished in the past, जो कि शुरू हुई हो और जो कि finish हुई हो यानी कि ख़त्म हुई हो past ही में, तो वो चीज़ आपकी कहलाती है past tense, जिसकी बात हमने पुरानी हो चुकी हो और वो एंड हो चुकी हो। ठीक है,
Now let's discuss future tense. Future tense expresses an action or situation that will occur in the future. फ्यूचर टेंस आपका एक्सप्रेस करती है एक्शन को या फिर वो एक्सप्रेस करती है सिचुएशन को जो कि आपके फ्यूचर में होने वाली हो. ऑब्वियसली मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर टेंस बेस करता है प्रेडिक्शंस के ऊपर. आप किसी चीज़ को प्रेडिक्ट कर रहे हैं, आप किसी चीज़ की प्रेडिक्शन दे रहे हैं बार बार कि ये चीज़ हो सकती है. लेट्स सपोज अगर मैं फ्यूचर टेंस की बात करूं, अभी आपके हालात जो चल रहे हैं मुल्क के, राइट, कोविड-19, इफ आई टेक दिस एग्जांपल, कोविड-19 में फर्दर क्या इम्प्लीकेशंस हो सकती हैं, ये चीज़ फ्यूचर टेंस में आएगी अगर आप आगे की चीज़ों की बात करेंगे. अभी पाकिस्तान स्पेशली कराची में मूनसून वेव्स हैं, मूनसून वेदर चल रहा है, तो जो भी आपका मूनसून से रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन आपकी ब्रॉडकास्ट की जाती है, तो वो तमाम चीज़ें फ्यूचर टेंस में आती हैं क्योंकि वो प्रेडिक्शन बता रहा होता है कि आगे जो है वो मूनसून कितने टाइम तक रहने वाला है. ठीक है, so that thing is quoted in future tense. Once again I repeat, I am keeping the lecture mixing mashup so that everyone can clearly understand that what exactly I am trying to say. Now moving forward, as I've already mentioned you in the course outline, the tenses are based on aspect. When I talk about the term aspect, then aspect का मतलब होता है कि आप situation की बात कर रहे हैं. वो situation जो कि currently चल रही है, यानी सूरत हाल is known as the aspect. Verb tenses may also be categorized according to aspects. हम verb tenses को categorize करते हैं aspect के accordingly, यानी कि जो situation चल रही होती है हम उस situation के accordingly उसको categorize करते हैं. Aspect refers to the nature of the action. Aspect refer करता है nature of the action को. nature यानी कि action जो है वो किस तरीके से आपका perform होने वाला है. Described by the verb, जो कि verb describe करता है. There are 4 aspects. 4 aspects यहाँ के ऊपर आपको जो है वो दिए गए हैं. पहला जो आपका aspect है that is the indefinite or simple. इंडेफिनिट और सिंपल यानी कि बिल्कुल सिंपल सा आपका एक सेंटेंस होगा, बहुत छोटा सा आपका सेंटेंस होगा और वो छोटे से सेंटेंस में आपकी पूरी जो बात होगी वो कंप्लीट हो जाएगी. सेकंड जो एस्पेक्ट होता है वो होता है कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव. अगर इसको सिंपल कहें या इंडेफिनिट कहें तो एक ही बात है. कंटिन्यूस का मतलब इटसेल्फ वो आपको हाईलाइट कर रहा है इस चीज़ से कि एक चीज़ कंटिन्यूएशन में चल रही है, ऑनगोइंग है, जो कि कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन स्टिल वो कंटिन्यू है. इसको कंटिन्यूस कहें या प्रोग्रेसिव कहें तो वो एक ही चीज़ है. ठीक है, प्रोग्रेसिव का इटसेल्फ अगर मीनिंग देखी जाए तो प्रोग्रेसिव का मतलब है कि कंटिन्यूएशन में एक चीज़ प्रोग्रेस कर रही है, राइट. इसकी मैं एक एग्जांपल देकर आप लोगों को कोट करती हूँ. जब भी आप लोगों का लैपटॉप कहीं के ऊपर वर्किंग के दौरान रुक जाता है, राइट, या फिर कहीं के ऊपर लोडिंग हो रही होती है, तो लोडिंग में हमेशा वो बोलता है इन प्रोग्रेस. इन प्रोग्रेस एंड देन लोडिंग का सिंबल आगे जो है वो आ रहा होता है. तो इन प्रोग्रेस का बेसिकली मतलब ये होता है कि इट विल टेक सम टाइम, इट इज इन कंटिन्यूएशन, एंड देन फाइनली द थिंग विल बी अपलोडेड व्हेनेवर यू अपलोड समथिंग और व्हेनेवर जब भी आप विंडोज डाल रहे होते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू दैट. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द थर्ड वन, परफेक्ट और कंप्लीट. अब देखो इटसेल्फ ये इसकी मीनिंग हाईलाइट कर रहा है. जब आप परफेक्ट की बात कर रहे हैं, परफेक्ट का मतलब है एक एक्शन जो कि कंप्लीटेड एक्शन है, यानी कि एक चीज़ जो कि कंप्लीट प्रोडक्ट या कंप्लीट फॉर्मेशन में आपके पास आ रही है, ये चीज़ आपका परफेक्ट है. या आप उसको कंप्लीट कहें या आप उसको परफेक्ट कहें, एक ही बात है. Coming towards the fourth one, perfect continuous. Perfect continuous means that it is in perfection whatever you are studying or whatever you are saying, तो वो चीज़ आपकी जो है वो परफेक्शन में चल रही है. उसके साथ साथ वो जो एक्शन है वो आपका एक कंटिन्यूस एक्शन है, यानी कि कंटिन्यूएशन में आपकी वो चीज़ जो है वो चल रही है. ठीक है, यानी कि परफेक्ट तो है लेकिन वो एक्शन आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, इट इज स्टिल इन प्रोग्रेस. Now, let's discuss about verb tenses. When I talk about the term verb tenses, then it means that indefinite tense. Indefinite कहूँ या simple tense कहूँ, एक ही बात है. The 3 indefinite tenses or simple tense describes an action but do not state whether the action is finished.
जब मैं बात करती हूँ इनडेफिनिट टेंस की, तो इसका मतलब ये होता है कि ये सिंपल टेंसेस हैं जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करते हैं बट नॉट स्टेट। ये एक्शन बताते हैं लेकिन किस स्टेट में है ये वो चीज़ नहीं बताते, वेदर द एक्शन इज फिनिश। यानी कि इनडेफिनिट टेंस में एक्शन फिनिश हुआ है या नहीं हुआ, या इन प्रोसेस है, तो वो चीज़ वो रिफ्लेक्ट नहीं करता, वो सिर्फ एक सिंपल सेंटेंस बताता है। Similarly, जब मैं continuous tense की बात करूँ, the three continuous tenses, incomplete tense or progressive tense, describes an unfinished action, which I've already explained in this previous slide as well. कि finish नहीं होता है, वो unfinished होता है, it's in continuation. Coming towards the third one, perfect tense. The three complete tenses or perfect tense describe a finished action. ये एक finished action को describe करता है. Coming towards the fourth one, perfect continuous tense. To combine the complete tenses and the incomplete tenses, जब हम complete और incomplete को combine करते हैं, to describe an action which was in progress and then finished. तो दोनों को combine करने के बाद product जो आता है वो ये चीज़ थी कि पहले एक action in progress था और फिर उसके बाद उस action को जो है वो finish किया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी आ जाती हैं verb tenses में. Now moving towards the next slide. Here is the list of rules for these tenses. What you have to do, you have to learn these rules. आपने इनको याद नहीं करना है, बल्कि आपने इनको अंडरस्टैंड करना है. अंडरस्टैंडिंग प्लस लर्निंग. अगर आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे सो डेफिनेटली आप टेंसेस में कभी भी कंफ्यूज नहीं हो सकते और ऑटोमेटिकली आप टेंसेस को और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे. When I talk about present tense, so present tense में इसकी simple जो form होती है तो वो first form plus आपका subject होता है. Subject आपका पहले आता है, subject plus first form of verb and then आपके ये helping verbs होते हैं s या फिर es and then आपका at the end object आ जाता है. Coming towards the next one, progressive form, am, is and are the helping verbs जिसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं एंड देन हम ing को ऐड करते हैं एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट. व्हेन आई टॉक अबाउट परफेक्ट फॉर्म, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज एंड हैव आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होता है एंड देन द ऑब्जेक्ट. व्हेन आई टॉक अबाउट परफेक्ट प्रोग्रेसिव फॉर्म, देन आपका सब्जेक्ट पहले आता है, देन हैज एंड हैज बीन और हैव बीन, इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस. ये आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. उसके बाद फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, देन प्लस ing एंड देन एंड में आपका आ जाता है ऑब्जेक्ट. कमिंग टूवर्ड्स पास्ट टेंस, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब आपका सिंपल फॉर्म में आता है. प्रोग्रेसिव फॉर्म में was and were आपके हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब देन ing एंड देन ऑब्जेक्ट. यू हैव टू कीप वन थिंग इन माइंड, ये जितने भी स्ट्रक्चर्स दिए हैं, स्ट्रक्चर हर स्ट्रक्चर के स्टार्टिंग में आपका सब्जेक्ट है और एंडिंग में आपका ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये ऑब्वियस चीज़ थी इसी वजह से मैंने नहीं लिखा. बाकी जो मेजर चीज़ थी वो मैंने यहाँ के ऊपर कोट किया है. Now when we talk about perfect form in past tense, तो उसमें आपका helping verb had होता है जिसके साथ आपका third form आता है. Then coming towards the perfect progressive form, had been आपका helping verb होता है, उसके साथ आपका first form of verb आता है and then ing. Now coming towards the third slide, that is future tense. Future tense के simple form में आपका will and shall जो है वो आपका वो होता है helping verb and then आपका होता है first form of verb. Coming towards progressive form, will be आपका helping verb होता है, उसके साथ आपका first form of verb होता है and then ing form. Coming towards perfect form, will have आपका helping verb है जिसके साथ आप third form of verb को लगा रहे हैं. Then coming towards perfect progressive form, will have been आपका helping verb है, उसके साथ first form of verb आएगा and then ing. So this is the list of rules of these tenses which you can see over here. So kindly just understand it. अब इसको better understand कैसे करेंगे मैं आपको with examples आगे की जो slides हैं उनमें मैं explain करूँगी, तो आपकी एक understanding develop हो जाएगी. Then it will be easier for you to understand. And if any question related to this come into the paper, it will be easier for you to attempt that question. Alright, now moving forward. As I've mentioned you before about it, कि tenses English grammar में आपके basic tenses सिर्फ और सिर्फ 3 होते हैं. That is past tense, present tense and future tense. But इनको further divide किया जाता है 12 categories में.
When I talk about past tense, I studied hard. ये एक past tense है कि मैंने जो है वो बहुत ज़्यादा hard यानी कि बहुत ज़्यादा उसको study किया था. When I talk about past tense further 4 categories में divided है. कौन कौन सी categories में? सबसे पहले आपका आ जाता है simple past tense, जो कि आपका ये रहा simple past tense. उसके बाद आपका आ जाता है past continuous tense. पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बाद फिर आपका आ जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड देन आफ्टर पास्ट perfect tense it is past perfect continuous tense. Well, there are two examples which are quoted over here past continuous tense की, लेकिन इसका जो structure है, all of these structures remain the same in past tense, right? Coming towards the next example, present simple, I study hard. Now you can see the major difference among both of them. मैंने यहाँ के ऊपर मैंने यहाँ पे ed नहीं लगाया, मैंने यहाँ के ऊपर ing नहीं लगाया. Simple I study hard. Meaning same है लेकिन formation is different. Present tense भी further 4 categories में divided होता है. Simple present tense, then present continuous tense, then present perfect tense. Coming towards future tense, future simple I will study hard. You can see the meaning is the same. इसमें ये बोल रहा है उसने पढ़ाई की बहुत hard यानी कि बहुत ज़्यादा. I study hard मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा. ठीक है, उसने पढ़ा था बहुत ज़्यादा, मैंने पढ़ा बहुत ज़्यादा, मैं पढ़ूंगा बहुत ज़्यादा. ठीक है, अब देखो मीनिंग या कहने वाली जो बात है वो सेम है किस तरीके से कि उसको पढ़ना है, लेकिन हमने पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर में उसको डिवाइड करके बता दिया. Future tense is also divided into further 4 categories. First category is simple future tense, then future continuous tense, then future perfect tense, and then future perfect continuous tense. All right. Sentences with the verb to be in simple present. Now this is basically the structure of simple present tense. के simple present tense का structure क्या होता है, उसका usage किस तरीके से होता है, किस sentence में हमें कौन सी चीज़ को add करना पड़ता है. So we are going to discuss in this slide about all of these things. Now, moving forward, when I talk about the structure of the sentence, so you can see very clearly here is the structure and here are the examples that how will you utilize it among the sentences. Affirmative. Affirmative आपकी simple present की category होती है. Affirmative का मतलब होता है positive, यानी कि जब भी आपको कोई positive बात करनी होती है तो आप उसको किस तरीके से करते हैं. Affirmative in present, simple present में जो इसका structure होता है, so you can see helping verb to be. Verb के साथ to be आएगा. ठीक है, ये रहा आपका subject, right? Subject के बाद आपका आ गया verb, यानी कोई भी एक्शन वर्ड, उसके साथ आपने हेल्पिंग वर्ब को लगाया. हेल्पिंग वर्ब को लगाने के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ टू बी ऐड किया, बट इट इज नॉट नेसेसरी इन सिंपल टेंस. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आप इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब लेते हैं एंड देन फिर आपका जो है वो ऑब्जेक्ट आ जाता है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एग्जांपल. देखिए सिंपल टेंस में सिर्फ और सिर्फ आप एम्फसाइज करते हो इन 3 हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर. ठीक है, I am Mexican. मैं एक मैक्सिकन हूँ. I am from Mexico. मैं मैक्सिको से हूँ. So you can see very clearly I आपका सब्जेक्ट हो गया, यहाँ के ऊपर आपका मैक्सिकन is the object and बीच में आपने helping verb को put in किया. I am, I यहाँ पर आपका सब्जेक्ट है. am या ऐसे लिखें या आप ऐसे लिखें, एक ही बात है. I am आपका helping verb है. ठीक है, from Mexico, Mexico is basically your object, right? Now for I use am. हमेशा एक बात याद रखिएगा, I के लिए I के साथ हमेशा हम am को यूज करते हैं. ठीक है, I am. अगर मैं बोलूँ she am, it doesn't make sense. If I say he am, doesn't make sense. This is the main reason कि I के साथ हमेशा am आता है. Now coming towards the next example, for he, she, it, use, is. हमेशा he, she और it के साथ जो helping verb लगता है वो is लगता है. किस तरीके से? Let's discuss further. He is Korean. वो एक कोरियन है.
ही आया था, इस वजह से हमने इज लिखा, एम नहीं लिखा, एंड कोरियन. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से दैट he am Korean, does it make any sense? No, it is not making sense. This is the main reason that we have quoted over here, he is Korean. Now coming towards the next example, ही इज फ्रॉम कोरिया, वो कोरिया से है. ठीक है, अब आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं ही इज, राइट. इज यहाँ के ऊपर हेल्पिंग वर्ब है. क्यों? क्योंकि ऊपर ऑलरेडी हमें ये चीज इंस्ट्रक्ट कर दी गई थी कि हमेशा ही, शी और इट के साथ कोरिया आएगा. ठीक है, अगर मैं इसको बोलूँ शी इज फ्रॉम कोरिया, देन द सेंटेंस इज राइट एज वेल. इट इज फ्रॉम कोरिया. अच्छा, एक और चीज है, देखो, हमेशा हम लोग इट वहां के ऊपर यूज करते हैं जहां के ऊपर हम नॉन लिविंग थिंग्स की बात कर रहे होते हैं, राइट. लेकिन जब भी हम लिविंग थिंग्स की बात कर रहे होंगे, भले वो ही हो या भले वो शी हो, लिविंग थिंग है ना, जेंडर की बात कर रहे हैं, सो जेंडर के साथ हमेशा ही या शी आएगा. ठीक है, इट इज फ्रॉम कोरिया. अगर द पार्सल नहीं, द पार्सल इज फ्रॉम कोरिया भी सेंस नहीं बन रहा. ठीक है, लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जाम्पल ओवर हियर कि हम इट को किस तरीके से कर सकते हैं. ठीक है, इट इज यू नहीं, इट इज यू भी सही है, लेकिन अगर हम बोले इज इट यू तो भी ये चीज सही है, वो फिर एक क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट हो जाएगी. ठीक है, अच्छा, इट इज फ्रॉम लंदन, यू कैन से दैट, या फिर यू कैन से दैट अगर आप किसी चीज की बात करें तो यू कैन से इट इज फ्रॉम लंदन. ठीक है, अगर कोई पूछे कि where did you purchase this bag, then you can respond it is from London. ठीक है, now coming towards the next example, for you, we and they. जब भी आप for you जब भी you, we and they की बात हो रही होगी तो उसके साथ हम हमेशा यूज करेंगे are. ठीक है, they are from they are New Zealanders. वो न्यूजीलैंडर्स हैं, यानी कि उनकी जो बिलोंगिंग है वो न्यूजीलैंड से है. ठीक है, दे आर फ्रॉम न्यूजीलैंड, वो न्यूजीलैंड से हैं. ठीक है, बिलोंगिंग्स आर फ्रॉम न्यूजीलैंड, दे बिलोंग फ्रॉम न्यूजीलैंड. ठीक है, अच्छा, यहाँ पर सेंटेंस ये भी हो सकता था, वी आर फ्रॉम न्यूजीलैंड, दे आर फ्रॉम न्यूजीलैंड, यू आर फ्रॉम न्यूजीलैंड. तीनों सेंटेंसेस यहाँ के ऊपर सही थे अफर्मेटिव में. ठीक है, coming towards the next one, that is negative. Just give me a minute, let me just have a glass of water and then I'll continue the lecture. Just give me a minute, please. All right, now coming towards the next part, negative. Negative का मतलब ये होता है कि हर चीज में मना करना. ठीक है, जिस चीज के लिए मना किया जाए वो चीज आपकी कहलाती है नेगेटिव. ये वो चीज है जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, ये वो चीज है जो कि हम प्रैक्टिस भी करते आ रहे हैं. नेगेटिव क्या चीज हो गई? डू नॉट टच द स्विच बोर्ड, स्विच बोर्ड को टच नहीं करना. आई विल नॉट कंप्लीट माई वर्क. अब आप देख रहे हो कि ये सारे नेगेटिव हैं. ठीक है, नेगेटिव किस तरीके से? आई डोंट वांट टू गो आउट, आई विल नॉट डू दिस, आई विल नॉट डू दैट. जिस चीज से आप स्टॉप किए जाएं, जिस चीज को आप मना करें, तो वो चीज आपकी कहलाती है नेगेटिव. ऑलराइट, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव, सो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली. सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के साथ आपके हेल्पिंग वर्ब इज एम आर ही रहेंगे, लेकिन हम क्या कर देंगे, उसके साथ नॉट को ऐड कर देंगे और नॉट के साथ आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ठीक है, नॉट मतलब यू आर स्टॉपिंग योरसेल्फ फ्रॉम समथिंग. कमिंग टुवर्ड्स द फर्स्ट एग्जाम्पल, अब देखो इसमें यू से ही सेम रहेगा, ही शी इट के साथ ये आना है, यू वी दे के साथ ये आना है. ठीक है, ये वाली चीज आपकी सेम रहेगी, सिर्फ सेंटेंस नेगेटिव में चेंज हो जाएगा. आई एम नॉट कैनेडियन, मैं कैनेडियन नहीं हूँ. आई एम नॉट फ्रॉम कैनेडा, मैं कैनेडा से नहीं हूँ. ठीक है, हमने क्या किया, स्ट्रक्चर सेम रखा लेकिन नॉट को लगाकर इसको प्रेजेंट सिंपल नेगेटिव कर दिया है. ठीक है, Coming towards the next example, she is not Japanese, वो जापानीज नहीं है. She is not from Japan, वो जापान से नहीं है. She isn't Japanese, वो जापानीज नहीं है. ठीक है, now remember one more thing, अगर हम is not लिखें तो भी सही है, अगर हम साथ मिलाकर लिखेंगे तो हम इसको isn't पढ़ेंगे इस not को, और isn't को इस तरीके से लिखा जाएगा.
Coming towards the third example, we are not Australians. हम Australians नहीं हैं. We are not from Australia. हम Australia से नहीं हैं. We aren't Australians. हम Australians नहीं हैं. अगर हम are not को इस तरीके से लिखें या अगर हम are not को साथ मिला के aren't इसको पढ़ते हैं, ठीक है, और लिखते भी ऐसी है, अगर हम ऐसे लिखें तो भी मीनिंग आपकी सेम रहेगी, ठीक है. All right, coming towards interrogative. Affirmative means something positive. Negative means minus. Not यानी कि stop करना. Interrogative का मतलब होता है question mark, किसी से कोई सवाल पूछना. वो चीज़ interrogative होती है. कहते हैं ना, अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल कोई जुर्म करते हुए पकड़ लिया जाए तो बोला जाता है कि इसकी इंटेरोगेशन होगी, यानी कि इससे सवाल जवाब होगा, उसके बाद ही फिर डिसाइड होगा कि इसको छोड़ना चाहिए या नहीं चाहिए. So that is known as interrogation. Interrogative means question mark. It means a questioning statement. Structure and the structure, this structure as well, it will remain the same, right? ASMR यहाँ पर helping verbs होंगे, subject and then फिर आपका object इसमें आ जाएगा, ठीक है. अब देखो आपका क्यों मैंने बोला कि helping verb पहले आएगा. Helping verb हमेशा interrogative sentence में पहले आता है, उसके बाद फिर आपका सब्जेक्ट आता है एंड देन ऑब्जेक्ट आता है. हम क्या करते हैं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को प्लेस कर देता है, ठीक है. किस तरीके से? नाउ लेट्स डिस्कस. हेल्पिंग वर्ब एम है, आई सब्जेक्ट है, अमेरिकन ऑब्जेक्ट हो गया. एम आई अमेरिकन क्वेश्चन है, दैट्स व्हाई एंड में क्वेश्चन मार्क को प्लेस किया है. कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, इज द पांडा फ्रॉम चाइना. क्या ये पांडा चाइना से है, ठीक है. इज यहाँ के ऊपर हेल्पिंग वर्ब था, द आर्टिकल है, पांडा आपका यहाँ ऑब्जेक्ट है. पांडा को यहाँ पर सब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, चाइना यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है. इज द पांडा फ्रॉम चाइना. ऑलराइट, कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल, इज इट एशियन. क्या वो एशियन है, ठीक है, यानी कि क्या वो एशिया से है, ठीक है. इज वाज हेल्पिंग वर्ब एंड इट आपका प्रपोजिशन है और यहाँ के ऊपर आपका आ गया ऑब्जेक्ट, ठीक है. Coming towards the next example, are you European? क्या आप यूरोपियन हो? Are आपका यहाँ पर आ गया है आपका helping verb, उसके बाद पर you subject है and then European is your object. क्योंकि questioning statement थी, इसी वजह से हमने end में तीनों sentences के question mark को place किया है. Now, when we talk about the present simple, there are a couple of examples which you can see in front of you. अफर्मेटिव में कैसे सेंटेंसेस होंगे? आई स्लीप, यू स्लीप, ही स्लीप्स. व्हेन आई टॉक अबाउट ही, स्लीप भी हो सकता है, स्लीप्स भी हो सकता है. नहीं, अच्छा देखो, आई की बात करें तो हमेशा स्लीप आएगा. ही और शी की बात करें तो उसके साथ हमेशा एस आएगा. इट की बात करें तो हमेशा एस प्लेस होगा आपके वर्ब के साथ, ठीक है. वी स्लीप रिमेन द सेम, यू स्लीप एंड दे स्लीप. Coming towards the negative sentence, I don't sleep, you don't sleep, he doesn't sleep. It means does not. She doesn't sleep. ऐसे लिखो एक ही बात है. It doesn't sleep. We do not sleep. You don't sleep. They don't sleep. Don't means do not. Now you can see the difference very clearly when we talk about she, or it. We place S in affirmative sentence, but in negative, when we speak about he, she, and it, we will place doesn't in he. In she, we will place the same doesn't, and in it as well, we will place doesn't. But rest of them, हम उनमें जो है वो don't या हाँ don't ही जो है वो place करेंगे, ठीक है. Coming towards interrogative, do I sleep? Do you sleep? बट जब भी हम ही, शी या नेट की बात करेंगे उसके साथ हम डज लगाएंगे, ठीक है. डू वी स्लीप, डू यू स्लीप, डू दे स्लीप, ठीक है. वी, यू, दे के साथ या आई के साथ हमेशा डू आएगा, लेकिन ही, शी या नेट के साथ डज आएगा. सिमिलरली शॉर्ट आंसर्स, यस आई डू, नो आई डोंट. यस आई डू, नो यू डोंट. यस शी डज, नो शी डजंट. यस he does, no he doesn't. Yes it does, no it doesn't. Yes we do, no we don't. Yes you do, no you don't.
Yes, they do. No, they don't. All right. Coming towards interrogative form. In interrogative form, the questioning statement, there are a couple of other examples as well. The major reason why am I explaining you this topic in detail? Because there were multiple questions which are included in the past papers related to tenses, right? Interrogative, I've already explained you. It is the questioning statement. Let's move forward. Do I work? Yes, I do. Positive. No, I don't. Negative. Do you work? Yes, I do. Positive. No, I don't. Negative. Does he, she, it work? ऐसे इसको पढ़ सकते हैं. Does he work? Does she work? Does it work? Right? Yes, he, she, it तीनों के साथ. Yes, he does. In positive, don't में यानी negative में no, he doesn't. Do we work? Yes, we do in positive, and then in negative, no, we don't. Do you work? Yes, we do in positive. No, we don't in negative. Do they work? Yes, they do in positive, and no, they don't in negative. Present simple affirmative. Now, when we talk about present simple affirmative, I have already explained you. This is the exercise which you have to do. You can share the answers in the comment section, and you can share it even there as well where we are connected. So this is the exercise which you all have to solve. Look at the pictures and complete each sentence with a verb from the box. What do you have to do? आपने क्या करना है? Already I have given the list of words over here. आपने पिक्चर्स को देखना है. पिक्चर्स को देखने के बाद आपने इन वर्ड्स को अकॉर्डिंग टू पिक्चर्स जो है वो इसमें ऐड करना है, एंड देन यू हैव टू कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, एंड देन यू हैव टू शेयर इट विद मी, राइट? सैम, अब मैं एक इनमें से आपको करके दिखा रही हूँ. यू हैव टू डू द रेस्ट. सैम डैश पिज्जा, राइट? सैम लाइक पिज्जा. Sam have pizza. Sam brush pizza. Doesn't make sense. Watch pizza. Doesn't make sense. Do pizza. No. Wash. No. Go. No. Make. Sam make pizza. No. It is not known as making. Rain. No. Teach. nahi. Study doesn't make sense. Fly doesn't make sense. It means कि जो sense बन रहा है वो दो word से बन रहा है. Like अगर होता तो ये खा नहीं रहा होता. It means like is also a cross. Sam have pizza. Yes. Have यहाँ के ऊपर appropriate word है which you will fill in this gap. So I have already solved one. You have to do the rest, and then you have to share your answers with me. Now, your turn now. I have already explained you with examples that what is the difference among all of them. So this is your turn to complete this exercise and share it with me. Write the affirmative negative form of the verbs in bracket. आपने negative और affirmative form verb की लिखनी है bracket में, and then you have to share the answers with me. Let's come with the first one. Dave blank not live in Madrid. Dave not live over there, right? अब आपने क्या करना है? आपने यस का, अच्छा अब देख रहे हो क्योंकि नॉट आया हुआ है, ठीक है, तो नॉट का मतलब है कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो हमें यहाँ के ऊपर इसको पॉजिटिव करके लिखना है, ठीक है. अब मैं कैसे लिखूंगी इसको? डेव लिव्स इन मैड्रिड. नॉट को हटा दूंगी, लिव के साथ एस लगाऊंगी, एंड देन ओवर हियर. This is how I'll complete this sentence. You have to do the rest on your own, and then you have to share the answers with me. I have added exercises in between, क्योंकि exercises अगर आप solve करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत easy हो जाएगा अपने concept को clear करना, that whether कितना ज़्यादा आपका concept जो है वो clear हुआ है. Coming towards the next one, present continuous tense. Now, when I speak about present continuous tense, so you can see it over here. Assertive and interrogative. Positive, negative, interrogative में yes and no type of questions and why type of questions, right? Positive में subject है, ism, are is the helping verb, then आपका verb है, and then ing form है, and then आपका आ जाता है object when we are talking about the present tense. I am playing football. You are studying. He is going to school. She is making tea. वो चाय बना रही है.
It is raining. बारिश हो रही है. We are speaking English. हम English बोल रहे हैं. They are helping poor. वो गरीबों की मदद कर रहे हैं. John is writing story. John story लिख रहा है. Birds are flying in the sky. Birds जो है वो हवा में उड़ रही हैं. ठीक है. Now you can see in all these sentences, it is very clear कि हमेशा जब भी sentence start होता है, आपका first letter capital होता है. जब भी sentence end हो रहा है, आप end में full stop को place करेंगे. That is positive. आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आपका एक structure दिया हुआ था, इसी structure के ऊपर आपके sentences base कर रहे हैं. Coming towards the next one, that is negative tense, subject plus SMR plus not plus verb with ing form and then आपका आ जाता है object. Now coming towards the first sentence, I am not playing football. मैं football से नहीं खेल रहा. You are not studying. तुम पढ़ नहीं रही हो. He is not going to school. वो school नहीं जा रहा. She is not making tea. वो चाय नहीं बना रही. It is not raining. बारिश नहीं हो रही. We are not speaking English. हम English नहीं बोल रहे. They are not helping poor. वो गरीबों की मदद नहीं कर रहे. John is not writing story. John story नहीं लिख रहा. Birds are not flying in the sky. Birds हवा में नहीं उड़ रही हैं. So you can see that how we have placed it over here. Subject, ये रहा subject. Helping verb, am ये रहा. Not यहाँ के ऊपर place कर दिया. Verb आपका play हो गया. ing form is verb के साथ लगा दी. Object आपका football है. Coming towards interrogative, yes and no type of questions. SMR helping verb है. Plus पर आपका subject आएगा. फिर verb, ing form and then object. And then question mark at the end. Am I playing football? Are you studying? क्या तुम पढ़ रही हो? Am I playing football? क्या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ? Is he going to school? क्या वो स्कूल जा रहा है? Is she making tea? क्या वो चाय बना रही है? Is it raining? क्या बारिश हो रही है? Are we speaking English? क्या हम English बोल रहे हैं? Are they helping poor? क्या वो गरीबों की मदद कर रहे हैं? Is John writing story? क्या John story लिख रहा है? Are birds flying in the sky? क्या birds हवा में उड़ रही हैं? Then come why type of questions. अच्छा WH मतलब who, what, when, where, why. ठीक है, 5 W's आ जाते हैं. Word आता है यानी कि 5 W's में से कोई सा भी आ जाए. फिर आपके helping verbs आएंगे. Then subject है, then verb है, फिर ing form है, and then plus object, and then the question mark. Where am I playing football? मैं कहाँ फुटबॉल खेल रहा हूँ. What are you studying? तुम क्या पढ़ रही हो. How is he going to school? वो स्कूल कैसे जा रहा है. Why is she making tea? वो चाय क्यों बना रही है. How is it raining? कैसे बारिश हो रही है. How are we speaking English? हम कैसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं. How are they helping poor? वो गरीब बच्चों की या गरीब लोगों की कैसे हेल्प कर रहे हैं. What is John writing? John क्या लिख रहा है. Why are birds flying in the sky? हवा में birds क्यों उड़ रही है. तो ये आपके WH type of questions हैं. You can see very clearly in each and everything. हमेशा आपका first letter capital है and then end में अगर for example सवाल है तो आपका end में जो है वो question mark आया है और अगर सवाल नहीं है तो end में आपका full stop आया है. Use 1. To tell action which is going on at the time of speaking. Present continuous tense आपको बताता है कि at the point, at the time कौन सा action हो रहा है. To tell further action which are pre-decided. और वो further उन actions के बारे में भी highlight करता है जो कि pre-decided है यानी कि जो पहले से decided actions आएंगे. Now, this is the exercise which you have to solve. What are they doing? What are they doing में you can see you have to match the pictures and the actions, write the matching numbers in the box. Match करें pictures के साथ, उसको write कीजिए. Second example में आपको लिखना है second exercise में now write complete sentences using the present continuous. ठीक है. Let's suppose they are watching TV. You can see it very clearly in the picture. They are watching TV. ठीक है. तो हमने इसको क्या किया, हमने सबसे पहले इसको जो है वो मैच किया. किसके साथ हमने मैच किया है.
ठीक है, वॉच टीवी के साथ हमने मैच किया, हमने इसका सेंटेंस बना दिया. यू हैव टू डू द रेस्ट ऑन योर ओन. नंबर 3, आस्क क्वेश्चंस एंड गिव शॉर्ट आंसर्स अकॉर्डिंग टू द साइन. अब आपने क्वेश्चन पूछना है एंड अकॉर्डिंग टू साइन आपने उस चीज का जवाब देना है. ये राइट हैंगे तो आपने इसका अफर्मेटिव में लिखना है आंसर. ये क्रॉस है तो आपने इनके आंसर्स को नेगेटिव में लिखना है. आपको यहाँ के ऊपर दिए हुए हैं, इसके अकॉर्डिंगली you have to complete the sentence and then you have to share it with me. This is another exercise which you have to do and you have to share the answers with me, right? Now, coming towards the third one, that is present perfect tense. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सबसे पहले आपका आ जाता है प्रोनाउन. प्रोनाउन के साथ आपका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज एंड हैव. उसके साथ आपका पास्ट पार्टिसिपल होता है एंड देन द ऑब्जेक्ट, राइट. अफर्मेटिव सेंटेंस में आपका हेल्पिंग वर्ब हैव होगा, ठीक है. हैव या हैज दोनों हो सकते हैं, डिपेंड्स के कौन से सेंटेंस आप लिखोगे. आई हैव प्लेड, मैंने खेल लिया. यू हैव प्लेड, तुमने खेल लिया. ही हैज प्लेड. अच्छा, एक और चीज है, आई के साथ यू के साथ हमेशा आप हैव लगाओगे. ही और शी के साथ हमेशा आपका हैज, ही शी एंड इट के साथ हमेशा हैज आएगा. आई एंड यू के साथ हमेशा आपका हैव आएगा, ठीक है. वी के साथ यू एंड दे के साथ हमेशा हैव आएगा, ठीक है. यू कैन जस्ट रीड डाउन ऑल ऑफ दीज एग्जाम्पल्स व्हिच आर लिस्टेड ओवर हियर. नेगेटिव में आप देख सकते हैं आई यू के साथ हमेशा हैव नॉट आएगा यानी हैवंट, और ही शी इट के साथ हमेशा हैजंट आएगा एंड देन वी यू दे के साथ हैवंट आएगा, ठीक है. इंटेरोगेटिव में आपका आई यू के साथ हैव आएगा, ही शी इट के साथ हैज आएगा, वी यू दे के साथ हैव आएगा. सो यू कैन सी द डिस्क्रिप्शन वेरी क्लियरली कि किस तरीके से आपने सेंटेंस को लिखना है. हैव कहाँ लगाते हैं और हैज कहाँ लगाते हैं. इंटेरोगेटिव में जो पुराना स्ट्रक्चर फॉलो करते आ रहे हैं वो इसमें भी होता है कि हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आता है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट एंड देन कम्स द ऑब्जेक्ट एंड देन द क्वेश्चन मार्क. नाउ हैज के साथ मैंने आपको बता दिया, जब भी थर्ड पर्सन है तो वहां के पर हमेशा आप हैज लगाओगे, बाकी सब में फिर आपका हैव आएगा. नेगेटिव में नॉट आएगा, क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है. इंटेरोगेटिव में नॉट नहीं आता, क्वेश्चनिंग स्टेटमेंट होता है. अफर्मेटिव पॉजिटिव होता है तो उसके साथ नॉट नहीं आता. तीनों में ये डिफरेंस है, ठीक है. आंसर यस आई हैव, नो आई हैवंट. अफर्मेटिव नेगेटिव. यस शी हैज, नो शी हैजंट. अफर्मेटिव नेगेटिव. नाउ when we talk about present perfect tense, the rest of the story, remember there are two primary reasons to use the present perfect tense. दो primary reasons आएंगे present perfect tense को use करने के. Reason number 1, to talk about complete past action at a non-specific time. The action is finished, you don't know, care or remember what when it happened. आपको नहीं पता कब वो चीज हुई है, लेकिन आपको ये पता है कि एक्शन आपका फिनिश हो गया. तो एक तो ये रीजन है जिसमें हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बात करते हैं. फॉर एग्जांपल, आई हैव रेड दैट बुक बिफोर. कब स्टार्ट की थी, कब एंड की थी, ये चीज नहीं पता, लेकिन ये पता है कि एक्शन आपका कंप्लीट हो गया है, ठीक है. शी इज ऑलरेडी डन हर वर्क, कि उसने अपना काम जो है वो कंप्लीट कर लिया है. रीजन नंबर 2, with the word for and since to talk about something that began in the past and continues to now. कोई चीज पास्ट में शुरू हुई हो लेकिन अभी भी कंटिन्यूएशन में चल रही हो, उसमें हम for and since को यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, I have studied at the school since last June. मैंने लास्ट जून इस, अच्छा देखो, जब भी आपको मंथ का पता होता है, राइट, तो उसमें फिर आप क्या करते हो, आप उसमें since को यूज कर रहे होते हो, ठीक है. अच्छा, लेकिन सिंस में यानी कि आपको एक्यूरेट डेट नहीं पता, लेकिन आपको ये पता है कि हाँ आप इतने टाइम से हो. लेकिन जब आपको एक्यूरेट नंबर्स पता होते हैं तो उसके साथ आप हमेशा फॉर को इस्तेमाल करते हो. शी लिव्ड इन वेस्ट पाम बीच फॉर 2 months, कि वो 2 महीने वहां पर रुकी है. When we use the present perfect with for or since, it gives the idea that something began in the past and continues in the present and may continue in the future. It means something पास्ट में शुरू हुई हो, प्रेजेंट हुई हो, लेकिन एक कंटिन्यूएशन फॉर्म में चल रही हो. सिंस प्लस पॉइंट इन टाइम. यूज अ प्रेजेंट परफेक्ट विद सिंस प्लस पॉइंट इन टाइम, यानी कि एक्यूरेसी की नहीं, यानी पॉइंट इन टाइम, जो पॉइंट को डिस्कस कर रहे हो उसके बारे में बात कर रहे हो. सिंस 5, since Monday, since 1994, to show when something started.
जब भी कोई चीज शुरू हुई होती है उसके साथ हमेशा since को इस्तेमाल किया जाता है. I have worked at this job since last year. He lived in Florida since March. They have been married since 1985. So this is exactly the exercise for present perfect tense. You have to answer the following and then you have to share the answers with me. This is another exercise which you have to do. Another exercise. And now come towards the last part, that is present perfect continuous tense. Now when we study about present perfect continuous tense, so you can see very clearly that we use the present perfect continuous tense to emphasize the duration or continuous course of an action. जब भी हम एक चीज की continuation में बात करते हैं तो वहां पर हम present perfect continuous tense को use करते हैं. I have been reading a book. मैं एक बुक को पढ़ती आ रही हूँ. I have been playing tennis for 2 hours. मैंने टेनिस को 2 आवर से यानी 2 घंटे से मैं कंसेक्यूटिव खेल रही हूँ. ड्यूरेशन क्या है? आई हैव बिन राइटिंग फॉर एन आवर, यानी कि हाउ लॉन्ग. जब भी कंटिन्यूएशन में बात की जाए तो वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. व्हेनेवर वी टॉक अबाउट पॉजिटिव, उसमें सब्जेक्ट आएगा, हैज एंड हैव विल बी द हेल्पिंग वर्ब, देन आपका वर्ब आएगा और इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट. The example is listed over here. He has written an essay. उसने एक essay लिखा है. When we talk about the negative tense, उसमें subject plus has and have helping word. अच्छा, हमेशा याद रखना है कि आपका he, she, it के साथ क्या आता है, we, you, they के साथ क्या आता है. ठीक है, plus not, plus verb and then आपका third form of verb. He has not written an essay. ठीक है, he, she, it के साथ हमेशा आप has लगाओगे, बाकी चीजों के साथ आप हमेशा have लगाओगे. Same goes in this case as well. In interrogative sentence, he has and have आपका helping verb है, then subject, then आपका verb का third form and then interrogator. He has written an essay. उसने एक essay लिखा है. ठीक है, present perfect tense कहो, present progressive tense कहो, एक ही बात है. यहाँ के ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स आएंगी, लिस्ट ऑफ एग्जाम्पल्स, और ये स्ट्रक्चर भी है, जैसे कि आई, यू, दे, वी के साथ आपका ये लगता है. ठीक है, हैज, एस हो, हैजंट हो, हैज नॉट हो, ये आपका इनके साथ लगता है. फिर बिन आता है, उसके बाद आईएनजी की आपकी फॉर्म आती है एंड देन आपका ऑब्जेक्ट आता है, फिर फॉर आता है एंड देन इट जस्ट कंप्लीट्स. ठीक है, तो किस तरीके से यानी वर्ब के साथ फिर आपका जो है वो आया और आपने उसको किस तरीके से जो है वो कंप्लीट किया पूरे सेंटेंस को. Now this is the exercise which you have to do. You have to answer the following questions. These are other questions as well. You have to do this exercise as well. You have to do this exercise as well, and then you have to share the answers with me. So thank you so much, everyone. I hope that this presentation turned out to be really informative for you, and all of those misconceptions related to the present, simple present, or related to all of its categories are pretty much clear to all of you. If you people are still having any sort of questions, so definitely you can ask me in the comment section below or wherever we are connected. Inshallah, we'll return back with you with another presentation. Till then, take care. Barakallah, everyone, and